Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all here in this webinar session being conducted by TNB Academy. It gives me immense pleasure to introduce our guest speaker for today's webinar, Mr. Sunil Kumar. In this webinar today, Mr. Sunil Kumar will discuss about Food Safety Manual, which is a very important document in ISO 22000 standard. Our distinguished speaker, Mr. Sunil Kumar, has done his master's in microbiology. He is also a lead auditor in ISO 9001, FSMS 22000, and ISO 22000 respectively. Mr. Sunil Kumar has audited several organizations for FSSC 22000 and ISO 22000 standards and has helped several others for their implementation as well. He has an industrial experience of around 10 plus years in the food technology, food processing, and in auditing of food-related industries. He has been imparting training to a number of organizations, entrepreneurs, and individuals on various topics related to ISO terminologies and their certification and implementation. This was just a brief introduction of our guest speaker today. And now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Sunil Kumar. I may request Mr. Sunil Kumar now to please take over and start the webinar. Thanks, Poob, and thanks to all TNB Academy to represent me as the trainer for the awareness program of FSMS manual. So today our topic is awareness program on FSMS manual. So FSMS manual is ISO 22000 food safety management system. So this presentation is based on ISO 22000 food safety management systems, an international standard that help gives to ISO 22000 training to teach food safety requirement and also to step for FSMS implementation as well as food safety system advantages to the performance of organization. So into the food safety manual, we will learn about how we will implement and how we will implement the food safety management system standard and how we will implement this system into our organization and how do we prepare the manual for the preparation of this food safety management system. तो हर फूड इंडस्ट्री जो होती है उसके लिए एक फूड सेफ्टी मैनुअल की रिक्वायरमेंट होती है. तो फूड सेफ्टी मैनुअल के अंदर सारी एसओपी, सारे रिकॉर्ड्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, वी ऑल मीन द थिंग्स व्हिच आर कैप्शन इनटू दैट मैनुअल. So before we proceed with the food safety manual, we will first start with the concept like what is food safety. So the food safety is the utilization of various resources and strategy to ensure that all type of food are properly prepared, stored and preserved so that they are safe for consumption. तो जो भी हम फूड बना रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, दे आर सेफ एंड दे आर फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन सो दैट if any of the customer or consumer who will consume that he should be fit for the consumption of this food. तो जो भी हम food बना रहे हैं, like what type of food we are preparing into our organization, that should be fit for the human consumption. Right. So the concept that food will not cause any harm to the consumer when it prepared or it eaten according to the intended use. So food safety is a scientific discipline describing like handling, preparation and storage in ways that they prevent foodborne illness. This include a number of routines that should be followed to avoid potentially severe health hazard. So there always be a food safety hazards, but they can be controlled if you understand how food become contaminated, how to prevent this happening. So जब भी फूड इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम करते हैं, we know that there are many type of hazard that can contaminate the food. So हमें पता होता है बहुत सारे जो hazards होते हैं जो हमें contaminate कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को एंड और उन hazard को कंट्रोल करने के लिए हमें कैसे फर्दर स्टेप्स लेने हैं, लाइक कैसे हमें उसको रिड्यूस करना है ताकि कोई प्रोडक्ट के अंदर कंटेमिनेशन ना जा सके. एंड the food safety management system. A food safety management system is a network of interrelated elements that combine to ensure that the food does not cause any adverse human health effects. So FSMS एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो फूड है वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट या कोई ऐसा हजार्ड नहीं करेगा. And these elements include like program, plans, policy, procedure, practices, process, goals, objective, method, control, role, responsibility, relationship, document, record and resources. तो ये बहुत सारे कुछ एलिमेंट होते हैं जो हमें FSMS के अंदर इंक्लूड करने होते हैं. सो दिस प्रोग्राम विच इंक्लूड लाइक प्लान कि हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान क्या है, क्या पॉलिसीज है, फूड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, क्या प्रैक्टिसेस है, लाइक क्या SOPs है,
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, वर्क इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसेस है, फ्लो चार्ट डायग्राम है, गोल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मेथड्स हैं, क्या कंट्रोल मेयर है या क्या कंट्रोल है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या रिसोर्सेज है, एंड क्या रिकॉर्ड्स. सो ऑल वी हैव टू these included into the food safety management system manual. So the five basic key element to ensure the food safety are like the key element of FSMS for managing and reducing the risk to the human health that is resulting from operation across the food chain to the final consumption. So फूड एक मीन दी जो रिस्क इंक्लूड होते हैं लाइक फ्रॉम ऑपरेशन से लेके जो फाइनल कंजप्शन तक, तो उसमें क्या क्या जो मेजर कंपोनेंट रहते हैं लाइक बेसिक की एलिमेंट्स होते हैं दैट आर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन. इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर मैनुअल के अंदर हमें इंक्लूड करना होता है कि कौन सी इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, लाइक इंटरनल कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है. सो इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे हम इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं लाइक थ्रू द मेल, थ्रू द लेटर्स. सो वो एक टाइप का कम्युनिकेशन हमें मेंशन करना होता है फूड सेफ्टी मैनुअल के अंदर. देन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल के अंदर लाइक हमारे सप्लायर्स एंड हमारी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, FSSAI है एंड और अदर्स जो भी पोल्यूशन कंट्रोल लाइक और इतने भी हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज है, पोल्यूशन PCI है, लाइक पेस्ट कंट्रोल है. सो दीज आर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. सो ये सारी जो कम्युनिकेशन है, मेथड जो वे हैं कैसे हम कन्वे करेंगे या करते हैं, वी हैव टू मेंशन इनटू आवर FSMS मैनुअल. देन सेकंड है मैनेजमेंट एलिमेंट और सिस्टम. क्या है मैनेजमेंट के एलिमेंट्स है, क्या सिस्टम्स है, राइट. एंड थर्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और PRP के अंदर हमारी क्लीनिंग है, SSOP है, हमारी पेस्ट कंट्रोल है, हाइजीन है, GMP एरिया लाइक प्रोसेस है, इक्विपमेंट है, मशीनरी क्लीनिंग है, तो वो सारी इंक्लूड करनी होती है. देन हजार्ड एनालिसिस लाइक हैसअप प्रिंसिपल, हैसअप का हमें हैसअप प्लान बना के मैनुअल के अंदर डालना होता है कि क्या हैसअप प्लान है, क्या हमारे स्टेप्स हैं, क्या कंट्रोल कर रहे हैं, क्या हमारे रिस्क असेसमेंट है. देन ऑपरेशनल PRP, सेक्रेटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऑपरेशनल PRP क्या क्या है. So all this the basic key concept we have to mention into the manual also. So FSMS manual is a series of sector specific food safety management system guidance document have been developed with the intent to provide the implementation guidance to the food businesses, especially the small and medium business that involved into the manufacturing, packaging, storage and transportation to ensure that the critical food safety related aspects are addressed throughout the supply chain. सो FSMS मैनुअल एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम डिफरेंट लाइक वी हैविंग द इंटेंट टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस टू द फूड बिजनेस, लाइक हमें जो भी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल है, मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो उनके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो रही है, तो उसके अंदर हम क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व करेंगे, तो वो हमें अपने मैनुअल के अंदर डालने होते हैं. FSMS manual that is based on schedule for FSSAI. एक तो FSMS manual ISO 22000 गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना. फॉर एग्जांपल हमें ISO 22000 की या FSSC 22000 की सर्टिफिकेशन लेनी है, मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन, तो उसके लिए हमें एक FSMS मैनुअल रिकॉर्ड प्रोसीजर रेडी करने होते हैं. एंड सेकेंड इट ऑल्सो रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूल फॉर FSSAI. शेड्यूल 4 के अंदर भी FSMS प्लान, FSMS मैनुअल के लिए हमें रिकमेंड करते हैं. सो दिस डॉक्यूमेंट आर बेस्ड ऑन शेड्यूल 4 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 and lay down general requirement of food and good hygiene practices to be followed by business operator and indicate the practical approaches which a business should adopt to ensure food safety. So these documents are recommendatory in nature and also provide the basic knowledge and criteria for implementation of HACCP, that is system by the food business, and sample HACCP plan has been taken from some established practices industry. So this could be used as a reference for industry and modified as an alternate based on their operation. सो जैसे हमने बात करी कि FSSAI के अंदर शेड्यूल 4 की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर हम FSMS मैनुअल एक हमें बनाना होता है इंडस्ट्री को, और एक ISO 22000 की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसके अंदर लाइक हैसअप है या और अदर डॉक्यूमेंट है, बेसिक हाइजीन रिक्वायरमेंट है, लाइक PRPs है.
So inspection checklist for food business operator to audit their facility and operation are also included in these documents. So the FBO, that is food business operator, can evaluate themselves based on the indicator scoring. Also, this document provide the important template and form to facilitate the FBO to maintain the records. So these include the mandatory form as prescribed by FSSAI and few template for maintaining record of processes that is critical for food safety. So in this regard, the following document have been developed as guidance to the food businesses. सो कुछ एक जो डॉक्यूमेंट है जो एफएसएसएआई ने भी लाइक रिकमेंड करे हैं या उनके बेसिस पे उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई है विच इज कॉल्ड एज ए मीन शेड्यूल फॉर हाइजीन चेकलिस्ट और शेड्यूल फॉर गाइडेंस डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एक चेकलिस्ट बनाई गई है पीआरपी को लेके सो उनका रेफरेंस है दैट इज पीआरपी सो पीआरपी दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आईएसओ 22000 एंड एफएसएससी 22000 सो कुछ एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है फॉर लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है फॉर फिश एंड फिश प्रोडक्ट है मीट एंड मीट प्रोडक्ट है लाइक फॉर हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशूटिकल्स है वेजिटेबल एडिबल ऑयल्स फॉर फैट सेक्टर है बेकरी सेक्टर है देन आल्सो फॉर द फूड ग्रेन लाइक वेयर हाउसेज है देन इट आल्सो फॉर द फ्लोर मिलिंग सेक्टर है देन कैटरिंग सो ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट बेस्ड उनके गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना एफएसएमएस मैनुअल या जी ऑर्गेनाइजेशन की जो PRPs है you can say that basic hygiene requirement है you can make prepare that. So FSMS manual that is based on ISO 22000. So एक हमने बात करी कि FSSAI जो शेड्यूल 4 है या जिसमें FSMS मैनुअल के बारे में बात करते हैं एंड सेकंड जो है दैट इज बेस्ड ऑन द ISO 22000. So this is a just example and I just taken a reference of that. ये एक reference example है कि कैसे आपको food safety manual prepare करना है. So firstly we will start with the food safety management system manual, then company name, then address, phone and fax. Then you नीचे आप उसमें लिख सकते हैं the holder of this manual is caution that the information contained here must not be known or circulated outside the company except where automated in accordance with the organization policy and administration procedure. So this manual is a property of the organization and shall be returned when requested. Then you can write down the table of content. Table of content के अंदर एक introduction है, your scope है, reference document है, term and definition है, term related to organization है, to planning है, sport operation है, performance evaluation है, contents of the organization है, जिसके अंदर like integration review updating the information related to the internal external content. So ये clause requirement है जो table of content के अंदर हमें डालना होता है. सो जैसे क्लॉज नंबर बात करिए हमने क्लॉज नंबर 1 क्लॉज नंबर 2 क्लॉज नंबर 3 क्लॉज नंबर 4 एंड क्लॉज नंबर 5 दैट इज लीडरशिप क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग के अंदर जो पार्ट आते हैं लाइक जर्नल प्लानिंग ऑफ एक्शंस इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन देन द मेंटेनेंस रिसोर्स कॉम्पिटेंस सो दिस इज द क्लॉज वाइज रिक्वायरमेंट इस क्लॉज के अंदर हमें क्या क्या जैसे डालना है तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं लीडरशिप की तो सेक्शन 5 में क्लॉज नंबर 5 लीडरशिप के अंदर लीडरशिप एंड कमिटमेंट है फूड सेफ्टी पॉलिसी है एस्टैब्लिशिंग दी फूड सेफ्टी पॉलिसी है कम्युनिकेटिंग दिस फूड सेफ्टी पॉलिसी है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है देन क्लॉज नंबर 6 आ जाता है जिसके अंदर एक्शन टू एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है then planning of action to address the risk and opportunity है integration and implementation to address risk and opportunity है evaluation of the effectiveness action है achieving improvement है food safety objectives है then planning of your planning of the changes you are doing into the manual or systems then maintenance है मेंटेनेंस के अंदर रिसोर्सेज है जर्नल है पीपल है इंफ्रास्ट्रक्चर है then competency awareness communication documentary information then 8th is operation including your planning and control PRP traceability emergency preparedness hazard control hazard analysis then updating the information है like so this is all the close requirement according to ISO 22000 so पहले हमने बात करी थी as per the FSSAI schedule for then secondly that is as per the ISO 22000 जिसके अंदर हमें 1 by 1 clause wise requirement डालनी होती है right so this is just a clause example I've given like 9th number clause internal audit which include audit planning prepared and conduct the audit result presentation internal audit management review then improvement including non-conformity updated the food safety management system continuous improvement breakthrough project small step improvement
Then I'm just a detail giving the example, like clause के example आपको दे रहे हैं, जैसे 4.2 clause है, understanding the need and expectation of interested party, so which include interaction of XYZ organization name with interested party, include defining the interested party relevant to FSMS, monitoring and analysis for interested party, then defining the your interested party related to the FSMS carried amendment review, then monitoring and analysis of interrelated interested party need and expectation, then interested party which include like owner, stakeholder, customers. So this is just example of how you will write down the clause, और clause के अंदर कैसे आपको requirement डालनी है, क्या interested party है, क्या basic need and expectation है, then what are the information about interested party. So this is you have to prepare your manual and the clause you have mentioned into your manual. So this is the elaboration of the clause. Clause के अंदर और आपने क्या आगे डालना है, like आपने एक इंटरेस्टेड पार्टी क्लॉज डाल दिया, देन उसके अंदर बेसिक नीड एक्सपेक्टेशन बता दिया, इंफॉर्मेशन अबाउट बता दिया, देन कम्युनिकेशन के बारे में बता दिया, लाइक टू वे कम्युनिकेशन इज कैरियड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन. Then next clause, sub clause is role, responsibility and authority. Okay. So the component of FSMS which play important role for the preparation and implementation of food safety manual into the food industry. So this is the food manufacturing practices. Food manufacturing practices are the procedure that should be followed during the plant construction and operation to ensure the food wholesome. Then GMP refer to the minimum sanitary and processing condition requirement properly building the processing plant. When implemented properly, GMP not only reduce new form of biological, chemical and physical contamination, but eliminate the existing contamination. So एक GMP this is play a major role into the FSMS manual. कि FSMS manual के अंदर GMP is a play a very big role to the organization, क्योंकि मेजर जो कंपोनेंट है, मेजर जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है मैनुअल का, मैनुअल ऑपरेशन का एंड मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन का. सो दैट इज कमिंग टू योर GMP. तो GMP के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर आ जाते हैं, लाइक कोई भी आपका प्लांट प्रोसेस है, प्लांट कंस्ट्रक्शन है, प्लांट पूरा ऑपरेशन है. देन GMP अंदर आपकी सैनिटरी लाइक योर क्लीनिंग SSOP, देन प्रोसेस कंडीशन लाइक बिल्डिंग यूटिलिटी. So all comes into your GMP. So GMP है वो बहुत major role play करता है into the FSMS. GMP not only reduce the new form of biological, chemical, physical contamination, but also eliminate the existing contamination. Right? The second is HACCP. तो एक GMP है जो बहुत major play role करता है. Second आपका HACCP. तो HACCP can be a part of GMP and it is a systematic program to ensure the food safety. And second HACCP is the recommended approach to the control the possibility of allergen contamination. So allergen के अंदर आप HACCP के अंदर देखोगे तो HACCP आपका हजार्ड कंट्रोल करता है, क्रिटिकल लिमिट को रिड्यूस करता है, देन एनालाइज करता है कि क्या रिस्क हो सकता है, देन क्या हजार्ड है, राइट. So HACCP as explained be part of GMP and it's a systematic program to ensure the food safety. And HACCP is the recommended approach to control the possibility of So HACCP is a recommended approach to control the feasibility possibility of allergen contamination, right? So it addresses the physical, chemical and the biological hazard, and it is a mean of prevention the other than the finished product inspection. So HACCP के through we can reduce the physical, chemical and biological hazard. So it is mean of prevention other than the finished inspection. So this approach has a significant benefit to the organization which operating within the food supply chain, and it is enabled them to determine the key control over processes and concentrate resource on activity that are critical ensuring the safe food. So as we discussed GMP and the HACCP which are the contribution of major player into the FSMS manual. कि FSMS के अंदर main जो control है that is to the control of hazard. Control of hazard के through ही हमारा जो भी process include होता है, which include your from farm to fork, we can say that ना आपका process initial से लेके जो भी आपका raw material receiving है, storage है, transportation है, dispatch है. So all this process include the risk assessment. तो risk assessment के अंदर हम पूरा process ही लिया जाता है. पूरे process के अंदर जब हम investigation करते हैं, so we include all the steps, right? So this is how we can implement the things. So FSMS manual के अंदर GMP and HACCP is a play major role. And जो भी manual की जो requirement होती है that is come from the guidance document. जो guidance document है that is ISO 22000 2018.
Okay. So thank you. Thank you. Thank you, Mr. Sunil Kumar, for this wonderful presentation that you have given today on FSMS manual and its elements. The information shared by you was very beneficial for all of us in understanding the concept of FSMS manual and what elements should be there in FSMS manual or while an organization is preparing it. I would say that we are really benefited by the knowledge that you have shared on this particular topic, and this particular video will be webinar will be placed on our YouTube channel as usual. So in case any of the viewers has any questions regarding the topic which was discussed today, so they can place their questions in the comment section of the video, and we will be transferring those questions to Mr. Sunil Kumar for the respective answers. Thank you, Mr. Sunil Kumar, for your time and effort that you have given us in the successful completion of this particular webinar. I hope to see you again soon with an exciting new topic. Till then, it's best wishes from TNV Academy. Thank you so much. Thanks, Apur, and thanks all TNV Academy.